just wanna be happy. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं दी राय मोड। आज की वीडियो में हमारे पास कस्टमाइज जीप है जिसकी आज हम ट्यूनिंग करेंगे। ये जीप हमने खुद तैयार की थी आज से साल पहले। इसके अंदर हमने 3S का इंजन डाला था जिसकी आज हम आपको ट्यूनिंग करना सिखाएंगे बहुत ईजी तरीके से। मैकेनिकों के खर्चों से आप बच सकते हैं और अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बचा सकते हैं। चलिए मेरे साथ। ये है हमारा इंजन। अब इसकी हम ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे बहुत इजी तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ औजार हैं, सीधे मुंह वाला पेचकस, 12 की टी, चाबी वगैरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमें उतार लेना, ग्रिप वगैरह सारे अलग कर देने। इसमें दो ही हैं, काफ़ी इजी इंजन है। इसके बाद 12 से हमने इसको खोल लेना। ये इसकी तार अलग कर देना और ये जैन भी इसका ख़राब ही है। ये हमारी मोटर बॉडी होगी अलग, काफ़ी गंदी है। तो गाइस ये हमारे पास इंजेक्टर क्लीनर है। ये आप किसी भी स्पेयर पार्ट की दुकान से 220 रुपये का ख़रीद सकते हैं। और ये सिलिकॉन है, ये पुरानी गाड़ियों में यूज़ होती है, नई गाड़ियों के लिए सिलिकॉन नहीं यूज़ होती, वो अब आपकी गाड़ी का हिसाब है। तो चलें साफ़ करते हैं। है बुढ़ी दांतों वाला। ये हो गया हमारी ट्रैक्टर बड़ी साफ। तो अब हम इसको दोबारा वापस फिट करेंगे अपनी जगह पे और रिजल्ट देखेंगे। But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will. अच्छा, तो अब हम इसे वापस फिट करेंगे। सिलिकॉन लगा लेते हैं। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.
Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया है कि तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और सेट भी हो गए। अब सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो रह गई हैं। एक तो इसका क्योंकि यही वाला पुराना सा लगाया हुआ है, ठीक है। I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. अच्छा आप इधर ले आए। ये पाइप पूरा चेंज किया है, नया लगा दिया। ये पूरा नए पाइप लगा दिए सारे, क्योंकि इसका जो और ये बेसिकली वजह ये है कि ये सारी मेंटेन की हुई है इसको पुरानी चीज़ में, क्योंकि ये इसका पावरफुल है। मसल में भगाते शिकाते इतना नहीं है, बस ये पहाड़ी इलाकों के लिए रखी हुई है, तो इसलिए इसमें पावर बड़ी ज़्यादा आ जाती है। ठीक हो गया, ये लें सारा कुछ लग गया, सारा कुछ लग गया। अब आप देखते जाएं कि इंजन वॉश के लिए सिर्फ हम पेट्रोल मारेंगे। अब हम अपने इंजन को पेट्रोल से वॉश करेंगे। अगर आपने करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई मसला नहीं। तो चलें करते हैं वॉश। पहले इंजन आपको दिखा देते हैं कैसा है। I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से जो क्लीनिंग की है इसकी, वो आप देख सकते हैं। सारी जीप कितनी साफ़ हो गई और पहले कैसी थी। तो गाइस अगर आपकी कंप्यूटराइज गाड़ी है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ना माइनस की तार इसकी उतारनी बैटरी की और उसको दोबारा लगाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी में चेक लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जाहिर उतार दो, फिर उतार दो, ऐसे ही उतर जाएगी। दूसरी वाली ये माइनस है, हाँ ये माइनस। तो इधर इसको उतार दें, थोड़ा देर के लिए उतार के ऐसे रख दो, प्लस के साथ मतलब के कर लेना ताकि करंट जो वो निकल जाए।
बस बस वो ना तारो, इसको वापस लगा दो, टाइट कर दो। तो ये लाजमी स्टेप है। तो ये थी हमारी ट्यूनिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। See you in the morning.